Habang merong konferensya, isip ko ano ba dapat gawin ko, kung paano ko ba matutulungan ang pamayanan ko bilang isang kabataan. Meron ba akong isang kakayahan para baguhin ko? We decided, me and the colleagues who were present in that conference, that the first agenda when we come back home, we shall share the same information with the youth who never got that opportunity to be there. So we did a book review of what we had learned and we shared it with the rest of the colleagues. Yo sí tenía como el servicio y sabía que era bueno, pero antes de la conferencia yo decía, bueno, servir, pero, o sea, empezar en una clase de niños o en un grupo prejuvenil, yo decía, no, pero yo no me siento capaz de hacer eso. Y además yo decía como que no, pues si ya hay otras personas que lo están haciendo, que yo creo uno no crea nada. Pero entonces en la conferencia me vi de que había una necesidad de que yo lo hiciera, de que lo que yo estaba aprendiendo no debía quedarse ahí, sino que yo debía empezar a dar ese conocimiento, esparcirlo de alguna manera. Y con eso sabía que de alguna manera había a las personas que yo les enseñara eso, también les iba a quedar y ellos también querrían hacer lo mismo que yo, que sería esparcir sus conocimientos. One thing that has been a point of consultation among the youth in gatherings post-conference is the idea of being able to elevate every interaction. And that was something that was really pertinent during the conference and really resonated with a lot of the youth, that although we have all of these different friendships, how do we make them more meaningful in every space that we're engaged in and time that we're spending together? The nature of the conversation between youth after the conference, I think the conversation become more elevated. They're more concerned about where the community is going now and what they can do to change. Once we start continuing these conversations that normally people don't really talk about very much, it can really increase connections with peers, with friends, with people in our community, so that we can have these meaningful conversations and be able to be kind and bring up these virtues in our lives, and the spiritual qualities that could help enhance the world and make it a better place. Got so many experiences after the conference. One of it being that working with a group of people requires sincere support and love. Working with them, I had to be able to humble myself to be able to support a group of people. And then also, in accompanying others, one does not work alone. So I had to consult with my fellow friends to see ways of which you can work us together as a group. This group of youth work together, try to plan, consult, reflect, act, do maybe reflect on their experiences to be able to see that they are working together a part of service. Yung conference nung sa Laguna, talagang malaki yung tulong niya sa mga kabataan na talaga na-empower sila na maglingkod dahil sa mga materials na ginamit natin, sa mga kung paano ba yung pakikipagkaibigan, yung tulong-tulong na sama-sama naglilingkod. So yung mga natutunan ko habang ina-accompany ko yung mga friends ko na naisama ko sa conference,
yung parang nakikita ko sa pagsasama namin yung unity ng bawat isa sa amin, tapos kung paano ba namin pinahalagahan yung bawat isa. Wala bang mga junior? Then sa pag-accompany ko sa kanila, natututo ako ng panibagong idea kung paano ba turuan yung mga junior youth, ano yung way nila. На самом деле конференция очень сильно укрепила наше чувство группы, чувство нашей сплоченности в группе. Даже в самых sложных ситуациях помогаем найти выход из этого. Peut-être chaque fois qu'il y a une difficulté, moi-même, l'aime là, je fais un autre nouveau, je prends l'autre nouveau connaissance parce que si le groupe là a un problème, on dit, on nous passe de façon ça ou bien mon façon pour nous passer et nous travaillons ensemble, ça permet de l'autre nouveau comprendre. Когда мы в группе, у нас у всех разные идеи, и мы это все совмещаем в одну картину. Из этого у нас появляется что-то более другое. И это мы уже применяем в практике. И опыт таков, то что мы, коллективно работая, всегда приобретаем что-то новое, узнаем что-то новое. И в пользу идет и наша идея, и идея, которая была произнесена с другой стороны. Seit ich von der Jugendkonferenz in diese Nachbarschaft gegangen bin und zusammen mit den Leuten dort arbeite, hatte ich nie mehr eine Zeit, wo ich irgendwie traurig oder deprimiert war, weil ich immer wusste, dass ich diese Gruppe von Freunden habe, die auch wenn was nicht so läuft, wie ich es mir gedacht habe, da ist und wir unterstützen uns gegenseitig. Anh rasa anh sangat gembira apabila anh bernak kumpulan Aji Nasaman. Tapi mah boleh injap, hi adalah sama, hi sama-sama hi belajar. Anh yakin Naid akan boleh maju ke hadapan dan boleh berkhidmat. Conference and watching people from all different parts of the country, like the islands of Shetland to like the inner city of London. So we saw how these materials and this process has really changed these communities in a really practical way. And it was the first time, I think, where we really saw that with our own eyes in action. We have a responsibility here now to help understand the needs and of the place where we live, which we also realise is not just by meeting, but actually also doing things together practically. So spending the time out in the neighbourhood with these youth who are now teaching children's classes and who are animating the junior youth group that we have has really just been very, very exciting for us as well. So there's not hundreds of youth that are involved in where we live, but it's a step forward from where we were 6 months ago. ஏழு பேர் வந்து நாங்கள் மீட் பண்ணியிருந்தோம். மீட் பண்ண பிறகு வந்து அவங்க வீட்டில் போய்ட்டு காய்ச்சல் நேரம் வந்து நீங்கள் கிளாஸ் கூப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க. அப்போ அதில் வந்து ரூகி 1, 2, 3 வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த பிறகு சமூகத்தில் வந்து இப்போ சில்ட்ரன் கிளாஸை வந்து அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அது பிறகு இளைஞர் மாநாடுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு வந்து இப்போ வந்து அவங்க வந்து சில்ட்ரன் கிளாஸில் இளைஞர்கள்லாம் அந்த எப்படி கிளாஸ் செய்யணுங்கிறத வந்து அவங்க புரிஞ்சு கொண்ட பிறகு வந்து டிவோஷனல் மீட்டிங்காக அதே மாதிரி நிறைய இளைஞர் வகுப்பாக வந்து எனக்கு முன்னாடி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கிளாஸ் வந்து செய்கிறதுக்கு. அது வந்து கஷ்டமே இல்லை. We should seek to better identify the role of the parents and really involve the parents, or if not involve, then help them identify or gain better clarity on what we are doing with the junior youth, because I feel that the adults are a really big force in the community, and I think speaking to them, we can also better help the community grow.
Nung nag-home visit po kasi kami sa kanila, ay home parents, na binisita namin yung mga parents nila, yung in-explain na namin yung purpose namin kung ba't namin tinuturuan yung mga kabataan dahil nga gusto namin mapabago yung mga kabataan. Ano po, kapag may paliwanag na maayos yung purpose nun, yung sila na mismo yung nagtutulak sa mga anak nila na sumama sa pag-aaral. Tapos sa amin naman po, yung mga parents namin, tuwa naman po kami kasi once na nalaman na nagtuturo kami ng kakabutihan, sila rin po nagtutulak sa amin na na magturo kami. Din minsan inahatid-hatid nila kami kung saan kami pupuntang lugar para magturo. Grew up in this area, just on the other side of the borough, so I know pretty much what life is like here. And I think what helped was, like I say, after the youth conference, wanting to make that impact and doing it locally and watching it spread.我们就青年就是参与青年大会的青年，再回来之后就有一个聚集来磋商，就是对于我们台北教区到底要怎么发展，才会是一个比较有成长式的状态。他可能是3年就是为了公司，所以像现在住在香港，但是他不是长期。于是我们就将台北划分为4个邻里区来发展。那我是作为其中一个邻里区的协助者。जी आहे तिथे एक मोठा चपटा दगड उंच आंब्याच्या झाडाच्या सावलीत आहे। मैं 10 में पढ़ता था और 10 में पढ़ता था, घर पे आता था, घूमता था बच्चे लोग के साथ, कहीं यहाँ घूम कहीं वहाँ घूम। ऐसे घूमते घूमते मुझे आज एक बार राष्ट्रपाल मेरा दोस्त था, तो राष्ट्रपाल ने मुझे बोला कि चलो यार अपन वहाँ पे जाएंगे युवा सम्मेलन में पंचगनी में। तो वहाँ पे जाके आए, मुझे कुछ अच्छे विचार मिले, अच्छा ज्ञान मिला वहाँ पे जाके, तो मैं यहाँ पे बदलाव करने की कोशिश किया। काय वाटतं या पॅराग्राफ मध्ये तुम्हाला? मुलांच्या माता त्यांना घेऊन सर्वजण फिर मैंने मेरे मन को कोशिश करा क्या अपन भी कुछ तो भी कोशिश करेंगे कि सब बच्चे लोग के जूनियर के क्लास वगैरह चालू करेंगे, कुछ तो जो अपने को सीखने मिला वो भी अपन बच्चे लोग को शिकाएंगे। मला परिचारक व्हायचे आहे। काय विचारतात? आरोग्य केंद्रात जाऊन के दिवशी मुली त्यांना विचारतात की मैं अभी मैं 10 में अच्छा जाने लगा था, फिर ऐसे पढ़ाई विढ़ाई भी चालू किया मैंने, ऐसे ही मैंने सब चालू किया और जूनियर क्लास भी चालू किया। खूप सुंदर जागा आहे आणि जेव्हा अनुसुंडा या ठिकाणी असते तेव्हा तिला शांत व आनंदित वाटते। После конференции желание уже заросло в несколько раз, когда видишь, что какую-нибудь проблему, которую рядом с тобой хочется быстрее ее исправить путем разговора, помочь людям тоже создать эту инициативу своих людей в России, помочь им. Ya, a partir de la conferencia yo emprendí una clase de niños. Cuando recién salimos de la conferencia yo pensé que cuando yo iba a dar clases de niños iba a ser mucho después, pero fue 2 o 3 meses después y hicimos avances para poder capacitarnos mucho más rápido y poder, o sea, tener una clase de niños, o sea, más cercana a lo que yo pensaba, que pensé que iba a ser así como en 1 año o algo así, pero fue rapidísimo. Crezcan, se desarrollen y se manifiesten. Antes
veía mi vida como que ya tienes hijos, te casas, no sé, vas a la universidad, tienes una casa grande y linda, pero nunca me enfoqué en pensar en otras personas que no fueran mi familia y yo. O sea, nunca pensé en ayudar a otras personas. O sea, no se me ocurría. Yo creo que, no sé, me ayuda muchísimo a aprender sobre la importancia de ayudar al resto y de servir. ለማህበረሰባችን የሚታየኝ አዲስ ተስፋ ይህ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ በዚህ ጄኔሬሽን ያለው ህዝብ የተፈጠረበትን ዓላማ አውቆ በዛ ሚት እንቅስቃሴዎችን ወይም ስራዎችን መስራት ማለት ነው